सो आज है डे 2 और मेरा इतने अभी तक वर्क कंप्लीट हुआ, तो जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करते हैं। आई सीडिंग मैंने स्टार्ट की, उसके बाद जो ओल्ड पर्सनस होते हैं ना, उसके अंदर एक विंकल्स होते हैं, उसको मैंने अच्छे से ऑब्जर्व करके उसको ड्रॉ किया, सेड किया। अब आगे का वर्क देखते हैं हम लोग। Hey guys, so this is the day 3 and आज मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ बियर्ड। इसके लिए मुझे एक टूल चाहिए, वो है इंडेंटिंग टूल। वो कुछ ऐसा दिखता है गाइस, इसके 2 साइड्स होते हैं और इसके अंदर एक छोटी साइज़ होती है और एक बड़ी साइज़ होती है यहाँ पे, और इसके और भी ज़्यादा साइजेस आपको अवेलेबल मिल जाएगी कोई भी नॉर्मल स्टेशनरीज में अवेलेबल। अगर आपके पास ये नहीं है, आपके पास भी बजट नहीं है, और ये अराउंड 60 to 120 में मिल जाएगा। अगर आपके पास बजट नहीं है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक मैकेनिकल पेंसिल और इसकी लीड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप जिस भी डायरेक्शन में बियर्ड ड्रॉ कर रहे हो या हेयर, उस हिसाब से आप स्ट्रोक्स अप्लाई करो। फर्स्ट आपको ये विजिबल नहीं दिखेगा, जब आप शेडिंग करोगे तब आपको विजिबल दिख जाएगा गाइस। सो आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड एंड नाउ स्टार्ट द बियर्ड ड्राइंग। We are forever learning, one step at a time. As long as the world is turning, I'll be by your side. We'll keep the fire burning, I'll never see you hurt. You know I can't explain it in a way of words. We both know that you'll understand, and you'll see if you take my hand, and I'll go out of my own way for you. I'll go out of my own way.